नेटवर्क इश्यूज़ हैं क्योंकि अभी लाइट नहीं है सिंस तो मैं वाईफ़ाई नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। ओके, वैशाली नाम है आपका, राइट? यस सर, मैं विशाली। नेम का प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ? यस सर, विशाली। अच्छा, ओके। अभी आप कंफर्टेबल हैं? यस सर, ओके, ओके। यस। अगर अभी आपको थोड़ी नर्वसनेस हो रही है तो 2 मिनट आप रिलैक्स हो लीजिए। अगर आपको लगे कि जब आप कंफर्टेबल हैं आंसर करने के लिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब तक जो मुझे आपके फॉर्म में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके रिगार्डिंग में आपसे हम सवाल कर लेते हैं, तब तक आप थोड़ा नॉर्मल यस हो जाइए, ठीक श्योर है? सर, श्योर। यस। वैशाली, ये बताइए कि आप वहाँ पे इंटरव्यू में लैंग्वेज क्या रखने वाली हैं? कंप्लीटली इंग्लिश और मिक्स्ड और हिंदी? सर इंग्लिश, कंप्लीटली इंग्लिश। इंग्लिश। अच्छा, ओके। मीन्स कंफर्टेबल हैं आप इंग्लिश में? यस कोई सर। इशू नहीं है। ओके। अ, वैशाली, एक चीज़ और है कि आपने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 1.5 ईयर्स का। सर एक्चुअली ये मुझे आपसे पूछना भी था। मैं एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट में बॉटनी फैकल्टी हूँ यहाँ पे। अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने टीचिंग किया हुआ है। यस सर, मैं अभी भी करंटली एम्प्लॉयड हूँ बट सर वैशाली, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? यस सर, श्योर। होपफुली कभी आप नॉर्मल हो गए होंगे। अच्छा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैशाली, आप जब वहाँ पे इंटरव्यू में जाएं तो आप जिस तरीके का टाइमिंग हो उसके हिसाब से ग्रीड करेंगे वहाँ पे। ओके। और लगभग अभी हम लोग यहाँ पे करीब 30 से 35 मिनट्स के आसपास में कन्वर्सेशन करेंगे, जिसमें आपकी पूरी जो भी आपकी तरफ से रिस्पॉन्सेस आएंगे उनके बेसिस पे आपको फीडबैक लास्ट में हम देंगे कि आपको किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना होगा ताकि आप और बेहतर से परफॉर्म कर पाएँ। ओके। यस सर, सर आप जिस एक किसी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। एक रिक्वेस्ट है आपसे। सर मैं थोड़ी कॉन्फिडेंस में लो हूँ, अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप प्लीज़ अपलोड ना करें, मतलब इसको मैं इट्स बहुत लॉस हो जाती हूँ। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके अंदर में भी यही फ़ियर है, जैसा अभी आप फ़ील कर रही हैं। आपके ही जैसे लोग हैं, बाकी जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप उसके लिए परेशान एकदम बिल्कुल ना हो। ऐसे लोगों का भी लिसन लिसन ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू देख करके बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम ही सिर्फ अकेले ऐसे नहीं हैं। और आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपका इंटरव्यू खराब होने वाला है? और खराब अगर होना होगा तो यहीं पे खराब होगा, राइट? इसीलिए ये मॉक इंटरव्यू हो रहा है ना, ताकि आपकी जो भी लैकुना है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आती हैं, उसे आप रेक्टिफाई कर सकें। ओके। और यस एक चीज़ सर। और, आप जब हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा, आप किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो आप हिंदी में आंसर करें, कंफर्टेबल है इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में आंसर करें, ठीक है? कई बारी मैंने नोटिस किया है कि कैंडिडेट क्या करते हैं कि उनको आंसर्स तो पता होता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम वो ठीक से चीज़ों को रख नहीं पाते अपनी बात को। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, मैसेज कन्वे होना। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? ओके। ओके, सो we would like to start right now. So, firstly, I would like to invite you for your interview and just give a brief introductions about yourself, so we can start further conversation. Okay, sir. Shall I start, sir? Yeah. Okay, sir. So, good evening, sir. My name is Vishali Dhiman. I belong to District Tuna of Himachal Pradesh. I've done my BSc Honours in Biotechnology from Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry. Then I pursued my Masters MTech in Biotechnology from Indian Institute of Technology, Mandi. After that, I've worked with a coaching institute named Aspire IT and Medical for 1.5 years in the role of botany faculty. And in my leisure time, I like to cook. Okay. So basically, your academic journey from UG to PG is called biotechnology, right? Yes, yes, Okay. Is there any reason to choose the biotechnology for your academic UG and PG journey, Vishali? yes. There has been a source of motivation. Actually, the place where I lived and I pursued my school, that is a small town in Himachal Pradesh called Chamba. Then my landlord, her daughter had pursued biotechnology, and then she further went for MBA, and she was a gold medalist in Bangalore. And that is where my motivation for biotechnology started, and that is why I wanted to pursue this career. Okay, means you have already idea about the biotechnology scope in the field of a private job. Uh, Yes, sir. okay. Have you any idea about the biotechnology government job? Sir, one of the best example is this patent examiner role in the field of biotechnology. Despite of that, there are some roles in DBT. There are some opportunities as research associates and as PhD scholars as well.
Apart from that, not in the government sector, but I would say in private sectors or sub-government organizations, there are much better roles in the post of scientist. So these are some things that I know about this field. Okay, Vaisali, although you have a good idea about the biotechnology scope in the government field, right? As you stated that there is a little bit scope in the government sector for the biotechnology candidate. Instead of knowing about the little big scope of biotechnology in the government sector, you chooses biotechnology as a mainstream subject for your UG and PG. Why? Sir, because to be honest, I was studying for NEET. I was a NEET aspirant, but somehow I couldn't do it. I got selected for BDS, but that was not my call. And I had already planned in the back of my head that if not MBBS or if not directly medical, then I would like to inculcate myself in the field of research, and to which biotechnology I think is one of the most prominent and the most well diversified areas in study right now. So that is why I chose biotechnology. Okay, Vaisali, can you tell me? Uh, as you know right now the scenario is for biotechnology is very critical. So many students have suffered from this situation that there is no any scope of the biotechnology in the especially in the field of government sector, right? Yes, And yes. there is some little scope of biotechnology in the teaching field. Yes, sir. So basically my question is that have you ever think about the teaching purpose in the biotechnology field? Yes, sir. I had thought about it, and that was the reason I chose coaching as one of the professions for my job, because I was somewhere inclined in teaching and in that profession. I thought of pursuing the field of proper professor or assistant professor like that, but I was not able to pursue PhD because of some reasons. And the one of the best opportunity for teaching that I got was this, so I pursued. Okay, Vaisali, as you mentioned in your Google form that biochemistry, proteomics, and bioenergetics are the your favorite areas of interest or favorite Yes, topics. so metabolomics. Yes, sir, Okay. metabolomics. So may I ask some questions regarding bioenergetics, biochemistry, or proteomics? Are Yes, you sir. ready? I'll try to answer them. Yes, sir. Okay, and try to speak loudly because your voice is so slow, so audience will be unable to listen your voice properly. Okay, sir. I'll try and speak Okay, louder, sir. okay. So may I ask some questions regarding biochemistry, energetics, and etc. Yes, sir. Sure. Okay. So there is a simple questions regarding biochemistry. How you can define biomolecules? Why these molecules considered as a biomolecules, not simply molecules? Okay, sir. So, when we go by the definition of biomolecules, or when I used to teach students about biomolecules, the first and the foremost thing that I taught them was that biomolecules involves those molecules which are basically hydrocarbons, carbon, hydrogen, and oxygen. Along with that, they must possess a carbon-carbon bond in them. So that is the basic definition of biomolecules. Bio, in short, means living, and molecules means anything composed of small atoms or compounds. But to be specific, when I used to teach them, or the concept which to me reflects biomolecules is that they must possess a carbon-carbon bond in them. Okay. Means according to you, for the criteria for to define any molecules can be biomolecules when there is a carbon-carbon bond, Yes, sir. right? So, Yes, sir. can I give some examples to identify the molecules are belong to the biomolecules or not? Okay, sir. So biomolecules basically involves glucose. I would say sugars, amino acids, proteins, lipids. These are some of the major examples of biomolecules. Visari, ethanol is a biomolecule. Sir, ethanol is a biomolecule How? because it contains a carbon-carbon bond, and it is composed of carbon, hydrogen, and oxygen, which is the basic composition of Have life. you ever read and have you ever studied ethanol is considered under the biomolecules? What are the Uh, examples of biomolecules? Sir, sugars like glucose, fructose, amino Have you ever acids. studied about the ethanol having is considered under the biomolecules? Sir, Ethanol, propanol, butyric acid, etc. All these compounds having carbon-carbon single bond. Suppose I take another examples of butanic acid. I take an example of methanoic acid. Right? There is these are the also organic compounds having yes, sir. carbon-carbon bonded. So Yes. can we use the term of biomolecules for these molecules like as ethanol, propanoic acid, ether, etc.?
Sir, I can say yes, we can call them biomolecules, but they are to be put in a specific category, to my knowledge, which is secondary metabolites. That is, they are not to be used directly in the body, or they do not have any physiological role as such in the life of that organism. When I say ethanol, to be specific, so according to my knowledge, I think this is the other Okay. Have you heard about the prime element? prime element. Yeah. In Sir, the term of biochemistry. I can't recollect anything about Okay. prime element. Means you don't have idea about the prime element. Have you heard about the micro and macro elements? Yes, so micro and macro elements or molecules. One classification that I know about them is based on the aggregates or the simplest form. Like the smallest or the simplest unit can be termed as a micromolecule, and the aggregate or that falls under a particular specific category of molecular weight can be referred to as a macromolecule or a macro compound. Okay. First. Vesali, tell me one thing. Glucose is considered as a prime source of a carbohydrate, Yes, sir. right? And we know also a same amount of a lipid can produces 5 times more ATP as compared to the glucose. Then Yes, sir. why our cells does not uses lipid as a prime source of a energy instead of a carbohydrate? Is there any specific reason? Yes, sir. If I could relate it to a concept, then it would be respiratory quotient. When we use glucose, then there is a respiratory quotient of one, that is for the amount of CO2 evolved, the same molecules of oxygen are used. But in terms of fats, the requirement or the ratio changes. For example, it does not produce a respiratory quotient of one, but it uses more oxygen and releases less CO2, which decreases the ratio, and that is why fats are not used as a prime source for energy. Okay, hoping that you have studied glycolysis, right? Okay, sir. Okay, glycolysis in the process of a glycolysis, all the intermediates are phosphorylated, right? Yes, sir. Like as glucose 6 phosphate, glucose 1,6 bis phosphate, DHAP, Yes. etc. All the Yes, sir. intermediate molecule of a glycolysis are the phosphorylated. Why Yes, there sir. is a need of phosphorylation of all these molecules having wasting ATP to phosphorylate the molecules? Yes, sir. We need to phosphorylate them in order to make them, or in order to render them that impermeable property. Because as we go for the first step, which is hexokinase mediated reaction, in which glucose is converted to glucose 6 phosphate, that phosphorylation is important because glucose can readily move in and out of the membrane. So, in order to trap it inside that particular cytosolic compartment, we need to phosphorylate it, and that is why further reactions are done like that. Okay. Vasali, tell me how many number of oxygen molecules will be required to complete the one cycle of a glycolysis? So no oxygen is used in glycolysis. It is a trick question, I know, but it is a universal process. It occurs in every aerobic as well as anaerobic bacteria or organism. It is not dependent on oxygen at all. Okay, suppose you have a two organism. That is, one is the bacteria, Yes. especially anaerobic, and one is the Yes. eukaryotic cells, right? Yes. Yes. So both cells have to produce the same amount of energy. Suppose there Yes. is there is a task to complete the 32 ATP. Okay, Okay. so Yes, sir. bacterial cells as well as eukaryotic cells, which Yes. which cells will uses more glucose to produces 32 number of ATP molecules? Either Sir, bacteria, yeah. anaerobic bacteria would use more glucose in terms of amount as compared to eukaryotic organism, because as you said, it is anaerobic bacteria. Yeah. It can only produce 2 ATP molecules through the process of fermentation or anaerobic respiration. But when we talk about a eukaryotic organism, it will perform proper respiration because it has mitochondria. It will perform aerobic respiration, and through one molecule of glucose it can produce 32 ATP, whereas that bacteria will need to almost use 16 glucose molecules to get up to that amount. So on the basis of that, we can say that the bacterial cells is less efficient than eukaryotic cells. So, in terms of energy production, yes, if you have specified the condition like Then anaerobic why bacteria. we use then why we use bacterial cells in the recombinant DNA technology as a host cells, stating that bacteria has a good ability to replicate more and more times and having more efficient as compared to eukaryotic cells. Is there any contradictions or something like? Uh, Sir,
I mean, can you please repeat your question, sir? My Go on. question is that on the basis of this fact that prokaryotic cells will uses more glucose molecules to produce the same amount of energy as compared to the aerobic eukaryotic cells, right? That means bacterial cells means especially anaerobic respirating bacterial cells is less efficient as compared to the eukaryotic. Then why we uses most of the time bacterial cells as a host cells in case of recombinant DNA technology to produces maximum amount of a desired protein or desired DNA molecule. Okay, sir, if I can relate to it, then maybe I can relate it to the small size of the genome as compared to the eukaryotic organism, that context. When we talk about a prokaryotic organism, the size of their genome is relatively less as compared to a eukaryotic organism. So, whenever we are trying to incorporate a DNA in that particular small size, they can produce that the resultant protein or the amount of mRNA more faster as compared to eukaryotic organism because of that replication time which they require. So to get the results faster, as they need less time for their doubling time and every other process, maybe that can be my answer for this question. Okay, Vasari, sucrose is also known as the invert sugar. Have you heard about it? Yes, sir, I've heard about it. Okay, so can you explain why it is also known as invert sugar? Sir, I can't recollect that point right Okay, now. sucrose is also known as the non-reducing sugar. Why? Yes, sir, it is known as the non-reducing sugar because sucrose is basically a disaccharide composed of glucose and fructose. It is formed by the linkage of alpha 1 to carbon, which means first Alpha. carbon of Sorry, repeat once again. Alpha one and alpha 1 beta 2, sir. okay. Alpha 1 beta 2. Alpha 1 is for the carbon of glucose, first carbon of glucose, and second carbon of fructose. First carbon of glucose contains the aldehyde group, whereas the second carbon of the fructose contains the ketose group. So both these carbons are used for the formation of the bond, and there is no remaining functional group which can reduce any other compound like ferrous ions or copper ion. So there will be no change in the color as there is no remaining active functional group. So that is why it is called non-reducing sugar. Okay, good answer. Vasali, have you idea about the chiral carbon? Yes, sir, I know about chiral carbon. Uh, Suppose I use a single carbohydrate molecules, right? You have a okay. single carbohydrate molecules, and I ask to you how many number of a chiral carbon will be in a single molecule of a glucose. Then what will be your answer? Sir, in the molecule of glucose, as far as I can remember, sir, there are four chiral carbons Okay. in glucose. I'm not very sure about that, sir. Okay, four chiral carbon, right? Okay, okay. Yes, I will explain each and every answers after the finishing of this session. Okay, so yes, just sir. this is the turn of your answer. How many number of stereoisomers can be formed by using a single molecule of a glucose? Sir, the formula to this is 2 raised to the power n, where n stands for the number of chiral carbon that are present in that particular molecule. So when I said 2 raised to the power 4, 4 is 8, that will come to 32, but that is a, I mean, I'm saying this in front of you, but that is the wrong answer, sir, I know. Okay, suppose a person suffer from deficiency of a carbohydrate, okay, in Okay, cells in the body, then okay, sir. which secondary molecules will be utilized by that particular individual for the production of ATP molecules in the place of glucose? Sir, then there is a sequence for respiratory substrates. If not carbohydrate, then the particular organism or that particular person body will use fats, and after that, proteins will be utilized for the process of energy or ATP generation. Okay, can enzymes also can be used as a energy product or energy molecules? Enzymes as energy products or molecules. Means you replied that carbohydrate, lipid, and proteins can be used by organism as a source of ATP or as a source of energy, right? So can we Yes, also use enzyme as a source of ATP or energy in any circumstances? sir.
I can't recollect any concept of using enzyme as a source of ATP production. I can't recollect anything If at I ask why, then um okay, think about it. Why the carbohydrate or lipid or proteins can be used as a source of ATP or a source of energy in the organism's body? Why? sorry sir, I was stuck in the previous question. Sorry, can you repeat? Yeah. Suppose I ask to you why glucose or sugar molecule, lipid molecules, and protein molecules can be used as a source of ATP or energy. Why? Why they can be used as a source of ATP or energy? Because so breaking the bonds of these particular molecules releases enough amount of energy. There is an exergonic process, so that is why they are used as the substrate for this If you particular use as previously you stated that ki protein can also be used for the production of ATP, right? Production yes of energy. yes So all the enzymes are also the protein. Then why we yeah cannot use the term enzyme for the ATP productions? sir I can't recollect why enzymes are not used, but proteins are used as the last substrate of energy production in our body because they produce a huge amount of ammonia, which is toxic for the organism or cells. That is why proteins are not used as the ultimate or the first source of energy production. That is Okay. what Have I you heard think. about the enzyme? So I've heard about enzymes, Yeah. but Okay. I'm a bit Isoenzyme. confused. Yes, I've heard these terms: isoenzymes, abzymes. Okay. But right now Isoenzymes, you are unable to say something about this. Okay. I'm unable to exactly state the Okay, concept. Vaisali, tell me one thing. As we all know, enzyme has a good property. That means it can increase the rate of reactions Yes, sir. by lowering of activation energy. Yes, sir. Okay, there is a key concept of the about the enzyme that each and every enzyme has a property to lower the activation energy and increase the rate of reactions. Yes, How sir. any enzyme can minimize the activation energy? What are the basic mechanism and concept behind it? Sir, any enzyme fastens the rate of any reaction by usually forming bonds faster with the substrate, and which is ultimately leading to the formation of the product a bit faster. And this is studied under the enzyme kinetics, the whole process in which substrate binds to the enzyme. Then there is a rapid formation of bonds between the enzyme and the substrate. Then there is a state called transition state, which facilitates the further conversion. And there are multiple stages through which this process occurs, and ultimately the product is formed. So when there is no enzyme, for example, in any particular reaction, then this conversion requires a lot more time as breaking and formation of new bonds is required. But enzyme helps in formation of coordinate bonds or some kind of bonds. For example, if we use any enzyme which contains inorganic ions with it, so the inorganic ions help in fitting of the substrate more faster to the active site and thus increasing the rate of reaction. ओके, वैशाली मुझे ये बताइए सपोज कि अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है देन फिर क्या करेंगे आप? सर मैं कभी आई विल बी ऑफ कोर्स अ बिट लेट डाउन। थोड़ा बुरा तो मुझे ज़रूर लगेगा क्योंकि इतनी पास आके अब कोई जाना नहीं चाहेगा। बट अगर ऐसा कभी होता है तो मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं जिस बात पे हूँ। मैं अभी नहीं तो शायद नेक्स्ट ईयर नहीं तो उससे नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनिटली get through this particular exam or any exam in general, but I won't stop now. ओके, वैशाली जब आपने पीजी के टाइम पे थी ड्यूरिंग योर एमएससी, सो Yes, sir. करियर को लेकर के आपका प्राइम जो टारगेट था वो क्या था? किस फील्ड में आपको जाना था? किस किस प्रोफेशंस में आप अपने आप को एज अ एम्प्लॉय एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में देखना चाहते थे? क्या मेन Yes, स्पेसिफिक एरिया था आपका? yes, sir. सर जब मैं परस्यू कर रही थी अपनी मास्टर्स, डेफिनेटली मेरी एमटेक के टाइम पे आई वाज मोर इंट्रिग्ड बाय रिसर्च, सो आई वांटेड टू परस्यू पीएचडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट देयर वर सम रीजंस व्हाई आई डिडंट go for that.
So I wanted to pursue the alternate path, which was teaching. So मैंने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया, but also deep dive, I knew I wanted to be in the government sector, or I wanted to be in a position where I could help and I could manage a little things where I felt there was a lack in my institution or in other places. So, patent examiner is one of those fields which is directly related with research, and research has always intrigued me in place. I would say when I was in my master's, I was also intrigued by the work my lab was doing, and I was able to formulate a project which included almost all the aspects, but time constraint, I wasn't able to fulfill every aspect. But patent examiner is one of those fields which is including research directly, and this will help me in going to a little places like from the state which I belong, that is Himachal Pradesh. Patent and its awareness is not something very common that people or the undergraduate students know. So this field is definitely something which involves research, and I will be able to, just give a little, I would say 10%, 5%, but help students to inculcate that thing or that kick for research. That is what I aim with this position. Okay, means basically he wants to be a teacher in the future, right? Sir, You will be happy. You will be happy being a teacher. yes, sir, I will be happy being a teacher, but that does not mean that I will stop or I will not aim for higher authority or any other exams. Okay, have you ever appeared for the net examinations, Visali? No, sir, I haven't appeared for net right now. Okay, I have had GATE earlier in my okay, previous year. Yes, sir. Along with that, there were some other competitive exams like medical biotechnology, master's exam for medical biotechnology for at AIMS Delhi, which is a very prestigious institute and just holds for only 14 students all over the country. And I was fortunate one to be amongst those 14 students. But I had joined IIT one day earlier, and I had pursued one semester, or my first semester was over there. So that is why I did not choose okay. Do you master. have any other academic qualifications like as a B.Ed, D.L.Ed, which is very very necessary for the teaching purpose? No, sir, I don't have any BEd or any other degree for that. But yes, rather than a school teacher, I would like to be a college professor. And Okay. for that, yes, a PhD is required. So in future, No, no, no. maybe. Currently, there is a no need of a PhD to be an assistant professor in higher education. There is a need of a either NET or GET. Suppose your master is MTech, right? So for you, there is a need of a GET certificate and your masters. Just only those things. And suppose any persons from the BS or MSc background, then he or she will require NET certificate as well as MSc with 55% qualifications for the assistant professor. Yes, sir. But But sir, definitely, but definitely, there is a weightage of a PhD scholars. yes, sir. If suppose you are going in an interview and there will be a two candidate, one is you, another is another person having PhD, then definitely interviewer will give a preference to the PhD Yes, scholars so and PhD they candidate. will prefer, of course, the Yeah. PhD candidate. And sir, to add, GATE score is valid for only 3 years, Yeah. and they have passed for me. So I will have to appear for GATE again, and then I will be eligible for that post. Okay, means you are trying. You are also trying to be the part of a research scholar, be the part of the PhD journey. Sir, fortunately, my guide, Dr. Shyam Kumar Maskapalli, is there for me. He is open for the position. He has already asked me to, whenever I want to join the lab, I can just write back to him. But I just want to explore my horizon. And if I want to, yeah, I will be pursuing PhD. Then it will be for sure abroad. I won't be pursuing it in India for that edge, of course, and for better revenues and better facilities there. Okay, Vesali, suppose you are going to be a patent officer, right? So, do Yes. you have idea about the role and responsibilities of any patent officers? What kind of a work responsibility will be offered to an CPDM officers or patent officers? Have you idea? Yes, sir. Yeah. Patent examiner is, I think, one of the most important person after the controller general of the patent design and trademarks in the IPO, in the Indian Patent Office. He or she is the person who directly understands the research invention. He's the person or she's the person who will be directly inculcated and intrigued by the research
He's the one who is responsible to check whether that particular work has been done in the future or not, whether someone has published it or not, or whether I feel that it is one of the concept which is non-obvious or obvious in nature. And without this particular person, the granting of patent would not be easy. And this is one of the major role of patent examiner. Along with that, whenever a patent is filed, it is the duty of the patent examiner to check whether all the application, whether all the forms are there, are they filled in the correct format, or is there something missing, or do they need any other clarification, any other diagrams, or any other further information. Then that is the work of patent examiner. Okay, Vasali, have you idea about the how many percentage of biotechnology is contributions in all the patent items in IPR office? What is the percentage contribution of biotechnology in total IPR items in the IPR office? Have you idea about it? Sir, I had read about this in the Okay. morning. Yes, sir. Okay, Vasali, have you heard about 3I? Three eyes? Yeah, 3I. No, sir. That Three eyes. is India Incubation Innovation. India Incubation Innovation. Sir, is that First I related with? is stand for India, second I stand for incubation, and third I stand for innovation. Have you heard about Sir, it? uh, This is the latest concept of IPR and CPDM office. So kindly go through it and read it properly. There is a very good information regarding IPR and CPDM office statisticals. That means how many percentage there is increase of the patent officers or patent item from last decade to the this decade. There is a comparative analysis, so it will be yes, very sir. helpful Yes, for sir. you. And I will share the PDF of that particular, and you will just go through it and you will find so many informations regarding the Sir, can I IPR. just ask you one thing here? I think I've read this PDF earlier, and there was, I think, 1 lakh patents or IP office related activity this year, and in every 6 minutes, I think there is one patent being issued in India. Is Uh, there something yeah, yeah. that's Basically, okay? the PDF is also available on the IPR CGPTM main official site. You can just go and download the PDF and read it. Yes, Okay. yes, Uh, One last question, Vesali, for you. Why you yes. think that you are a good and potent candidate for the CGPTM patent officer? Okay, sir. Sir, I think I am a good fit for the role of patent examiner because I can just answer this based on my experience. The role of patent examiner is basically to evaluate and to inspect whether something has been done or not. And I can just answer this question with one of my experience. During my master's in IIT Mandi, I was given a project which was based on the metabolic profiling of Himalayan apples. So my guide has told me that there is something which is a particular institute doing or pursuing or has done in the past, and I want you to work similarly like that so that we can publish and patent something related to that. I had no idea who was the author, which institute has done it, but I was able to validate the whole paper by myself at my home itself. And Okay. this I realized when I was in the campus, when my PhD senior told me that if you know this, then you must have read that paper. I said, no, I don't know about the author or even the varieties or whatever the techniques, technology they were using. But I was able to do that. So I think when I will have the opportunity and the databases and the resources for this, I'll be able to perform much better than what I did at my home. Okay. Vasari, one last question from your background, that is biochemistry. As you stated that your favorite topic is proteomics, right? Yes, yes, Have you yes. heard about the Metabolic. string? STRING, string. Sir, actually, my field is metabolomics. We profile the metabolome of the Yeah, yeah, organism yeah. using standard techniques. So string is Uh, also related to the proteomics and metabolomics. That's why I'm asking about it. String is an you can say that it is a graphical representations of all the metabolites or all the protein molecules interconnected to each other. You might be possible that you have seen so many research paper, research article that these molecules are interlinked to this one, this one, this one. Such kind of images will be found by the string.
Yes, sir. I don't remember anything like string, but yes, I've seen some flux analysis. I've seen some statistical analysis that you're talking about. Maybe the software or the thing that they have used is different, but I had used a software which is called Metabo Analyst, which was basically grouping or differentiating two different things or comparing two things based on the amount and the concentration of metabolites that were present there. So what I got there was heat maps from which by color I can identify, like as if lighter colors or darker colors, Yeah, yeah, like exactly. red. Okay, if that you're talking about, sir, yes, I've seen them. That basically represents the amount of the concentration of anything that is present and helps in comparing two or three different samples or variants, whichever is under consideration. Okay. May I ask some other questions? Yes, sure. Okay, for the identification of a bacterial as well as a eukaryotic genome, there is a process of DNA isolations. We generally use 16S rRNA, Yes, rDNA for the yes. bacterial identification and 18S rDNA for the eukaryotic. Okay, sir. Have you idea about that? Sir, I've heard about 16S rRNA rDNA. and Yeah. 18S rRNA. Sir, they are basically the component of ribosomes. 70S ribosome contains the 16S No, no, no. I am rRNA. not talking about that. 16S rDNA are the conserved sequences which are preferably used for the identification of a bacterial strain or species. Uh, Sir, I don't Okay, know about that. I think this is not the domain of your interest. Yes, I So, was working on plant metabolomics, to be specific. okay. Yes, sir. Uh, थैंक यू वैशाली. सो बेसिकली अब कंक्लूजन पे हैं हम लोग और Yes, sir. इंट्रोडक्शंस का पार्ट आपका ठीक था. आपने इंट्रोडक्शंस ठीक से दिया. सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ मतलब अगर मैं 100 मार्क्स में से अगर देना चाहूँ तो 85 टू 90 के आसपास है आपकी सब्जेक्ट पे आपके. Thank you, sir. The ऑलमोस्ट जो आपने leads. आंसर्स दिए वो बहुत ही ठीक तरीके से थे. कुछ कुछ सवाल में आंसर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, जैसे लाइक एज मैंने आपसे पूछा कि एंजाइम्स को हम क्या एज अ एटीपी या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ कर सकते हैं. सो उसका Yes. आंसर आपको आप नहीं दे पाई, आपके पास उसका आंसर नहीं था. डिनाई करने का तरीका भी आपका बहुत अच्छा लगा. अगर आपको जो चीज़ नहीं आती है आपने बहुत ही पोलाइटली तरीके से उसे डिनाई किया कि सॉरी सर अभी हमको उसको नहीं पता है. और आईपीआर वाले सेक्शन पे भी आपकी पकड़ थोड़ी ठीक ठाक है. सजेस्ट करूंगा कि अभी करेंटली सीजीपीटीएम की जो ऑफिस है उसके वेबसाइट पे जा करके आप दो तीन पीडीएफ हैं लाइक एस 2024 का जो अमेंडमेंट किया गया है आईपीआर के रूल को लेकर के, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें. वो पीडीएफ मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा. साथ साथ में आईपीआर को लेकर के थोड़ी सी और सजगनेस बना लीजिए. लाइक है जैसे अभी 2023 के सेशन में जो सीजीपीटीएम की ऑफिस है उसके मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या रहे, Yes. उसके भी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा. दूसरा, इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल स्केल पे इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है आईपीआर के सेक्टर में, आईपीआर के फील्ड में. कौन सा ऐसा डोमेन है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिस फील्ड से इंडिया को सबसे ज़्यादा पेटेंट ऑफर होते हैं. राइट, जैसे सपोज एग्रीकल्चर है, मैकेनिकल है, सिविल है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है. और चूंकि आप बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो बायोटेक्नोलॉजी का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है टोटल आईपीआर पेटेंट में इन इंडिया में. राइट. Yes. कौन Okay, sir. कौन से लेटेस्ट आपके पेटेंट चीज़ें हो रही हैं थोड़ा उस पर भी नज़र रख लीजिए. ये सबका जो स्टेटमेंट वाली जो पीडीएफ होगी मैं आपको पीडीएफ अभी ये इंटरव्यू आपका फिनिश होगा तो शेयर कर दूंगा, आप Okay, उसको sir. अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा. बाकी आपका 2 अप्रैल को आपका इंटरव्यू है. Yes, sir. तो होपफुली कि आप कल कल ही निकलेंगे या परसों निकलेंगे. कल सर दिल्ली के लिए कल निकलूंगी. अच्छा, ओके. बाकी आपकी ड्रेसिंग सेंस ठीक है और जब भी आप रिप्लाई दे रही हैं तो आपके जो जस्चर्स एंड पोस्चर्स हैं वो भी ठीक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फेस पे कॉन्फिडेंस भी ठीक है. जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ही दिखता है कि आप उस पर कॉन्फिडेंस है. सो ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके लिए. और हाँ, मतलब जो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा आपको जब आप रिप्लाई कर रहे हो तो अ, जैसे सपोज कोई क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है
तो शायद मेरी बात फिनिश होने से पहले ही आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि आप राइट नाउ रेडी हैं आंसर्स करने के लिए। ओनली डूइंग तो इट। थोड़ा यस। सा वहां पे आपको पॉज लेने की जरूरत है। पहले जो इंटरव्यूअर होंगे उनकी बात को आप फिनिश होने दीजिएगा, राइट। सपोज इनिशियली स्टार्टिंग से क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि आपको उसका क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता है। अगर आपको आता है तब पर भी आप काम डाउन होकर के उनकी बात को फिनिश होने दीजिए, राइट। उनकी बात फिनिश हो जाए देन उसके बाद अपना आंसर रिप्लाई करना शुरू करें। ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट डालेगा। और अभी मुझे यही लगा कि जब मैं सवाल पूछ रहा था तो आपको उन सवालों का आंसर आ रहा था, तो आप मेरे बात को फिनिश होने से पहले ही एक्सप्रेशन देना शुरू कर रहे थे कि यस सर, आई नो अबाउट दिस एंड जस्ट आई वांट टू टेल यू। ओके, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे कर लीजिए। दूसरा आपके लिए सजेशन ये है कि जब आप रिप्लाई दें तो थोड़ी आपकी साउंड की जो पिच है वो थोड़ी स्लो है। आप हो सके, जैसे सपोज ये हो सकता है कि यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बट वहाँ पे जब आप जाएंगे तो एक चैम्बर होगा और जो भी इंटरव्यू के पैनलिस्ट होंगे वो आपके पास में बैठे होंगे, मतलब नियर बाई में होंगे, टेबल का डिफरेंस होगा, ठीक है। यस। तो थोड़ी यस। सी अगर आप अपनी साउंड के पिच को अगर लाउड रखेंगे तो इंटरव्यूअर को थोड़ा सा कंफर्ट होगा। ओके। यस। ओके सर। बाकी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है वैशाली, आप अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे करके आप आएँगी। और जैसे अभी थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आप नर्वस हुई थी, शायद हो सकता है कि इससे ज़्यादा नर्वसनेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, बिकॉज़ वहाँ पे नियरली 3 और 4 मेंबर का पैनल होगा। इसमें एक आपके हेड चेयरपर्सन होंगे, बाकी 3 उनके पैनल होंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि जैसे सपोज़ अभी आप हमसे बात कर रही थी तो आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा था और ये काफ़ी एक अच्छा साइन है कॉन्फिडेंट होने का। सपोज़ वहाँ पे 3-4 लोग अगर बैठे होंगे तो जो भी कैंडिडेट आपसे सवाल करेगा, आपका जो फेस टू फेस डायरेक्शंस होगा सिर्फ़ उनसे कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ना कि बाकी लोगों से। आप उनको देख कर के ही आंसर कीजिए। अगर दूसरा कोई बंदा पूछता है तो आप उनको देख कर ही करिएगा, ठीक है। बाकी इंटरव्यू में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। थोड़ा-सा बस ये है कि इनिशियल की 5 मिनट्स तक के लिए आपको थोड़ा-सा अपने अपनी जो नर्वसनेस है उसको ओवरकम करना है। उसको करने के लिए सिंपल आपको बस यही है कि जैसे आप हैं वैसे रहिए। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ बनावटी होने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन आपकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप न्यू दिल्ली में जा रही हैं तो हो सकता है कि प्रेफरली वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करें कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन अगर सामने वाले जो इंटरव्यू के पैनलिस्ट होंगे, अगर वो आपसे हिंदी में सवाल करते हैं, दैट इज़ वाई मैंने बीच में आपसे एक हिंदी में सवाल किया था, आपको याद हो शायद तो। यही चेक यस। करने के लिए कि क्या आप उस चीज़ को समझ रही हैं, बट आपने वहाँ पे इनिशियली तो हिंदी स्टार्ट किया बट कंटिन्यू उसको आपने इंग्लिश में किया। तो उसके लिए सजेशंस आपको ये है वैशाली कि जब अगर इंटरव्यू के पैनलिस्ट आपसे हिंदी में सवाल करें तो बी पोलाइट, आप उनको हिंदी में ही जवाब दीजिए। आप वहाँ पे ये ना दिखाइए कि सर हमें इंग्लिश आती है और हम इंग्लिश में ही जवाब देंगे, राइट। वहाँ पे 3-4 जो लोग बैठे होंगे ना, सबका अपना अलग-अलग टास्क होगा। हर कोई आपकी हर चीज़ को जज कर रहा होगा। कोई आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा होगा, तो कोई आपके बॉडी लैंग्वेज को देख रहा होगा, कोई आपके रिप्लाई करने के तरीके को देख रहा होगा, कोई आपके नॉलेज को चेक कर रहा होगा। सब बड़े साइलेंटली अपना काम कर रहे होंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो जब अगर आपसे इंटरव्यूअर इंग्लिश में पूछें तो आप इंग्लिश में रिप्लाई कीजिए, अगर हिंदी में पूछते हैं तो आप हिंदी में ही रिप्लाई कीजिए, ठीक है। सो ये 2-3 सजेशंस हैं आपके लिए। आप थोड़ी अपनी आवाज़ लाउड रखें, सामने वाले के क्वेश्चंस को स्टेटमेंट को फिनिश होने दें, देन अपना रिप्लाई करें आप, ठीक है। और यस। लैंग्वेज वही यूज करें जो सामने वाला जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चंस को ऑफर करता है। बाकी आपका इंट्रोडक्शन का पोर्शन ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक है, आपके रिप्लाई करने के जो वे हैं वो भी ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपकी ठीक है, ड्रेसिंग सेंस भी आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपको ब्रशअप करने की ज़रूरत है अपने आईपीआर वाले सेक्शंस पे। बाकी आपकी जो कोर बायोकेमिस्ट्री है उस पर आपकी पकड़ ठीक है, ठीक है। तो अभी आप रिलैक्स हो सकती हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि कैसा फील हो रहा है आपको अभी इंटरव्यू दे करके। सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं जितनी नर्वस थी अब उतनी नहीं हूँ। ओके। एक पॉजिटिव फीडबैक मिला है तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली में भी अच्छा ही होगा। बाकी सर मैं आपसे एक सजेशन चाह रही हूँ। बिल्कुल। वहाँ अगर वो पूछेंगे कि आप किस में आंसर करना चाहते हैं, तब तो मैं उन्हें बता दूंगी कि ये अगर मेरी वो फीलिंग पूछते हैं कि मतलब विच लैंग्वेज यू यू प्रीफर, राइट, तो अगर आपसे है। इस तरीके से सवाल पूछा जाता है तो आप बहुत पोलाइटली बोल दीजिएगा कि सर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ, अदर हिंदी और इंग्लिश,
ठीक ओके है? सर। मतलब आप उनको ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी दीजिएगा, मतलब ऐसे जैसे सपोज़ मैंने आपसे यहाँ पे पूछा, तो आपने बोला कि हाँ सर मैं इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ, इसका मतलब कि आप हिंदी में भी बात कर सकती हैं। है ना? हाँ जी। क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्टेट से लोग आएँगे जिनको हिंदी में बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे आसाम के लोग आएँगे, हो सकता है केरला या कर्नाटका के लोग आएँगे तो उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है। सो दैट इज़ व्हाई ये सवाल पूछा जाता है और मैंने भी आपसे सवाल पूछा। तो जब इस तरीके का सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत ही पोलाइटली आंसर करेंगे कि सर आई एम कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, आइदर हिंदी और इंग्लिश। सो आपने ऑफर दे दिया सामने वाले को कि सामने वाला जिसमें चाहे उससे पूछ सकता है। आपने बाउंड नहीं किया कि नहीं सर मैं इंग्लिश में ही दूँगी या फिर मैं हिंदी में ही दूँगी। ठीक है? जी और जी कुछ सर। सवाल है आपका? सर क्या वहाँ पे वो लोग पूछेंगे हमसे कि सब्जेक्ट में आपका पकड़ किस पे अच्छा है, या वो मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं? आपका आपकी आपका जो फॉर्म है ना, उस फॉर्म से उनके पास डेटा रहता है। आपने अपना लिख ओके। रखा है कि आपने एमएससी इस चीज़ में किया हुआ है। मैंने आपसे सवाल ये इसलिए पूछा था क्योंकि सबका एक अपना स्पेसिफिक डोमेन और ज़ोन होता है और यस सर। अगर आपसे ये सवाल वो नहीं भी पूछते हैं, तो आप अपने आंसर्स में कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ कीजिएगा कि वो जानबूझ करके उसकी तरफ जाएँ। ओके सर। जैसे सपोज कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि काइंडली जस्ट गिव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शंस, राइट, और योर वर्क एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो आप अपनी इंट्रोडक्शंस में ही बता सकते हैं कि सर बेसिकली आई वांट टू गो फॉर पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री और आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द टू फाइंड आउट द सम न्यू थिंग्स इन बायोकेमिस्ट्री। ये जो बायोकेमिस्ट्री का टर्म होगा ना, इंटरव्यूअर को एक पॉइंट देगा सवाल पूछने के लिए कि अच्छा मतलब आप बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपने उनको मोल्ड किया किधर की तरफ, बायोकेमिस्ट्री की तरफ, है ना? तो ये पॉसिबल है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपसे ऐसा क्वेश्चंस को ऑफर करें कि व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट या व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक। बट अगर वो नहीं भी करते हैं तो आप उनको अपने आंसर्स में ही ये रिप्लाई आप कर देना कि आप इसकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। यस सर। ओके। सर जैसे मेरा वीक पोर्शन है इम्यूनोलॉजी। या सर मुझे वो कभी समझ नहीं आई, ना मुझे वो कभी याद हुई है। मैंने बहुत कोशिश की सर आपने नेम पे। सीजीपीडी में कोर्स परचेज किया था? यस सर। मैं कैन आई बी रियल ऑनेस्ट सर, मैं सच में आपको एक्नॉलेज भी कर रही हूँ। मैंने, आप मानेंगे नहीं मेरी बात, मैं पेपर से 2 घंटे बीच में जो ब्रेक था पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, मैंने सिर्फ आपके नोट्स देखे हैं सर। मैंने सिर्फ वो पीडीएफ देखी है, और यू वोंट बिलीव, मैंने जो जो पीडीएफ देखी ना सर, वो हर क्वेश्चन वहाँ 25 मार्क्स के एग्जाम में था। चलिए, यू आर सो लकी कि आपने सर जो पर, मे बी आई एम लकी, मे बी आपने जो मटेरियल दिया है वो इतना अच्छा था कि आई वाज एबल टू राइट एवरीथिंग। मैं सच बता रही हूँ सर, मुझे चीजें याद नहीं रहती, बट मैंने उससे पहले पेंटोज फॉस्फेट पाथवे देखा, वो पेपर में आया। मैंने उससे पहले ग्लाइकोलिसिस वगैरह वो सब कुछ देखा, वो पेपर में आया। तो मुझे पेपर देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का एक बार फाइनली रिवाइज करने के लिए देखा, वो सेम क्वेश्चन 25 मार्क्स में आया था सर। बट आपने मेरे साइड बट आपने एग्जाम के बाद आकर के थैंक यू नहीं बोला, गलत बात है ये। सर, मैंने आपको मैसेज किया था। मैं सर बहुत शाय हूँ टू बी ऑनेस्ट। मेरी आपसे अभी बात हुई, इसीलिए आई एम दिस ओपन विद यू और हमारी बात हुई है। नहीं तो मैं आपको पब्लिकली इसीलिए ग्रुप पे भी मैसेज नहीं करी थी, बिकॉज मुझे बहुत शर्म आती है सर, मैं बात नहीं कर चलिए पाती ओके, हूँ। तो होपफुली कि अब इसके बाद आपको आपको ऐसा शर्म फील नहीं होगा, थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबल फील कर रही होंगी और अभी आप कंफर्ट होंगी। ओके। यस सर। मैंने सवाल ये इसलिए पूछा था कि आपने सीपीडी में कोर्स नहीं लिया, क्योंकि अगर आपने उसमें जो इम्यूनोलॉजी की क्लासेस ली गई थी और इम्यूनोलॉजी का जो कंटेंट वीडियो और पीडीएफ के फॉर्म में दिया गया था, अगर आप उसे पढ़ेंगी तो मुझे नहीं लगता कि आपको इम्यूनोलॉजी समझ में नहीं आएगी और उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि समझ में नहीं आने वाला है। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप इम्यूनोलॉजी में वीक हैं, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं आपके ड्रॉबैक्स पूछते हैं, राइट? जैसे जब आपकी पर्सनालिटी के रिगार्डिंग सवाल आपसे पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि हाँ आपके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, किन किन सिचुएशंस में आपको लगता है कि आपकी ये वीकनेस पॉइंट है, राइट? तो यस। वहाँ पर आपको चीज़ें बतानी होती हैं। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर आपसे पूछा जाएगा कि हाँ आपके वीक एरिया कौन सा है, तो आप बता दीजिए कि सर इम्यूनोलॉजी, अगर पूछते हैं तो, अदरवाइज अननेसेसरी अपने आप से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। यस। एक चीज़ और है आपके सजेशंस के लिए, सपोज जैसे अगर आपसे पर्सनालिटी के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा कि साली बताइए कि आपने 5 कोई ऐसी चीज़ जो कि आप में लगता है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है जो कि आपको एक बेटर कैंडिडेट बनाता है, तो क्या आप बता पाएंगे? ट्राई करती हूँ सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, मुझे अगर लगता है अभी कि अभी आंसर नहीं है तो इसके लिए आप थोड़ा सा थिंक कीजिएगा। 5
पॉजिटिव थिंग्स इन यू, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपको एक बेटर कैंडिडेट बनाता है। लाइक जिसमें पॉइंट आपको दे सकता हूँ, जैसे आपके पास स्किल है टाइम मैनेजमेंट करने का, पब्लिक को कन्विंस करने का, पब्लिक को डील करने का, राइट। यस, और बिल्कुल। स्ट्रेस को मेंटेन करने का, स्ट्रेस सिचुएशंस में भी आप अच्छे से अपने आप को काम डाउन रख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा पजल नहीं होते हैं कि हाँ स्ट्रेस आया नहीं कि आप एकदम घबरा गए। तो ये सारी स्ट्रेंथ हो सकती हैं आज के टाइम पे। मल्टीटास्किंग होना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट माना जाता है, राइट। यस सर। तो अगर आपको ऐसा यस। लगता है कि आपके पास भी एबिलिटी है कि आप एक लिमिटेड टाइम में दो तीन चार टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, सपोज जैसे आप टीचिंग कर रही हैं, टीचिंग भी कर सकती हैं, पीएचडी का काम है पीएचडी भी कर सकती हैं, और अभी अपनी सेल्फ स्टडी करनी है सेल्फ स्टडी भी आप कर सकती हैं, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट वर्क एंड जो कि आप कंपाइल कर रही हैं कोई एक गिवन स्लॉट में। तो ये एक यस। टास्क है जो कि मल्टीपल टास्किंग में आता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी ये मानी जाती है, राइट। तो इस तरीके के सवाल आपसे पर्सनालिटी को लेकर के जब पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि आपके अंदर में कौन कौन सी वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि आपको एक बेटर कैंडिडेट बनाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मतलब मेरे में क्या पॉजिटिविटी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टीचिंग स्किल ठीक है। अगर 10-20 टीचर वहाँ पे हैं तो मैं भी अपनी एक आइडेंटिटी बना सकता हूँ। आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल इन टीचिंग वाइल अदर डूइंग अदर जॉब। तो मुझे लगता है कि बाकी काम की कंपेरिजन में मैं टीचिंग ठीक से कर सकता हूँ। सो ऐसे ही आपके पास जो चीज़ एबिलिटी है, सपोज यू आर ऑल्सो टीचर, सो अगर आपको लगता है कि सर आपकी मतलब मेरी टीचिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो बच्चे अच्छे से रिसीव कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टीचिंग। तो आपके पास भी स्किल अच्छी है, राइट। तो यस इस पे सर। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए विशाली, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक इंटरव्यू के लिए। कल टाइमली आप अच्छे से निकल जाइए, वहाँ रीच कर जाइए और वहाँ पहुँच करके थोड़ा सा रिलैक्स होइए। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है, आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आप वेल इक्विप्ड हैं और प्रिपेयर अच्छे तरीके से जो है वैसे ही रहिए, अच्छा देकर के आप आएंगे। और इंटरव्यू जब हो जाए तो हो सके पॉसिबली तो फिर आप ज़रूर मैसेज करके बताएं कि सर आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। ठीक है, बिल्कुल सर, फॉर श्योर सर। चलिए सर, ओके। जो क्वेश्चंस थे जिनके आंसर मैं नहीं दे पाई, सब्जेक्ट रिलेटेड, हाँ, एक तो वो सर बायोमोलिक्यूल्स वाला, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रही थी बायोमोलिक उसको। हाँ, वहाँ पे आपका गलत था। बायोमोलिक्यूल्स आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के बोल रहे थे, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में वाइटल फोर्स थियरी चल रही होगी। वाइटल फोर्स थियरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को लिविंग सिस्टम में पाया जाता है बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स को डिफाइन किया जाता है कि लिविंग सिस्टम में होने वाले एट लीस्ट किसी एक या दो प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले सारे मॉलिक्यूल्स को आप बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। A molecules which is responsible for life processing in individuals can be considered as a biomolecules. So अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस आप इमेजिन कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में चलने वाले जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन भी इन्वॉल्व होता है, लिपिड भी इन्वॉल्व होता है, वाइटामिन भी इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज वाई दे आर क्लासिफाइड एज द बायोमोलिक्यूल्स। Okay, so biomolecules can be defined as what? Molecules which can involve in at least one life process of an individual will consider as a biomolecules. दूसरा सवाल मैंने पूछा था प्राइम एलिमेंट, है ना। प्राइम एलिमेंट का यस। मतलब ये होता है जिसे आप फंडामेंटल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिन की एलिमेंट से आपके पूरे साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट बना हुआ है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दीज आर द प्राइम एलिमेंट। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़े हैं और जिन बायोमोलिक्यूल्स से पूरा प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर बनता है, उन सारे बायोमोलिक्यूल्स के जो की एलिमेंट है वो क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो या प्रोटीन हो या एंजाइम हो, एटसेट्रा। ठीक है, आपने उसका आंसर ठीक दिया था कि कैसे कोई एंजाइम किसी भी रिएक्शंस के रेट को इन्हांस करता है और क्या करता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है। वहां पे एक टर्म आप यूज कर लीजिएगा, बाइंडिंग एनर्जी। जब कोई भी सबस्ट्रेट किसी एंजाइम से क्या करता है, बाइंड करता है, तो सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट मतलब सबस्ट्रेट का जो बाइंडिंग साइट होता है और एंजाइम के जो एक्टिव साइट्स होते हैं, उन दोनों के बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। जैसे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, इस तरीके से आयनिक बॉन्ड। और इन बॉन्ड के इंटरेक्शन होने से वहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। And that binding energy will lower the activation energy of the that substrate or reactant molecule to participate in the reactions.
सो टेक्निकली एंजाइम क्या कर रहा है कि जब एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जब बाइंड कर रहा है, तो उस बाइंडिंग के दौरान वहां पे कुछ केमिकल बॉन्ड बनते हैं, जो कि एक तरीके से कैसे हैं, रिवर्सिबल टाइप के, मतलब ब्रेक भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल टाइप के नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का इंटरेक्शन होता है, और उन इंटरेक्शंस की वजह से वहां पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंसिडर्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। So, due to the binding energy, enzymes are able to minimize or to decrease the activation energy of the substrate, and that's why enhance the rate of a reaction. This is the prime mechanism of an enzyme. Okay. Okay, Yes, got it. और कुछ? बस फिर यही थे, बाकी तो चलिए, ठीक ही है। अच्छा लगा वैशाली आपसे इंटरेक्ट हो करके, और होपफुली कि आप भी अभी काफ़ी कंफर्ट और काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रही होंगी इस सेशन के बाद। और बाकी आपके लिए हमारी तरफ से ढेर सारी विशेष, आप अच्छा परफॉर्म करके आइए। और मुझे बेहद खुशी होगी जब आप इंटरव्यू से होकर के आएंगे और आप बताएंगे कि सर इंटरव्यू वॉज वेरी गुड। सो आई विल वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।